Safa Tare for your amazing naat. मत छीनो इन स्कूल के बच्चों से मोबाइल, मत छीनो इन स्कूल के बच्चों से मोबाइल, ये अकेले रहने से डरते हैं। ले लो एग्जाम भी एसएमएस से, ले लो एग्जाम भी एसएमएस से, क्योंकि यही वो चीज है जो ये मन लगाकर पढ़ते हैं। We will move for the continuation of this program. So before moving for a welcome speech, I would like to give you a brief information about the efforts laid by different great personalities of Wisdom School for today's result. आज का जो मौजूदा रिजल्ट है, इसके पीछे कई लोगों की मेहनत है। तो उन लोगों के बारे में एक दो लाइन में आप लोगों को बताऊंगा। Little information about those that what they have done for today's result, including all management, teachers, parents, and everybody. Have a look over that. Firstly, I am longing to congratulate and thank to Mr. Mohammad Asifuddin sir, Secretary, Wisdom Institution, for making such a successful study schedule and academic plan, especially for 10th standard, such as extra classes and even arrange some classes on Sundays by paying extra or surplus salaries to the concerned subject teachers who are coming on extra classes. We also arranged and took many motivational classes and sessions for inculcating confidence in students to rock in examination. So first, credit of today's result goes to Mr. Mohammad Asifuddin sir for his valuable contribution towards students' education. Please everybody, put your hands together once more. Thank you so much sir on behalf of all the students and parents for your support. Secondly, I am very delighted to congratulate and express my thanks on behalf of all the parents and students to Mrs. Bushra Jamal ma'am, Managing Trustee of Wisdom Institutions, for making flourishing plan after completion of SLC syllabus for 10th standard students. She bothered day and night for 10th result. She framed the SLC exam revision schedule every year, which includes rapid rounds and this time objective examination. You people might be surprised. आखिरी में जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स लिए हैं हम बच्चों के, तो मैडम की ही प्लानिंग थी। आप पूछ सकती हैं अपने बच्चों से कि जो हम एग्जाम्स यहाँ लिए हैं पूरे वही क्वेश्चंस एग्जाम्स में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां। थोड़ा बॉयज डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करे बोलो मैडम को हम फोन लगाए, मैडम एक राउंड नको मैडम लास्ट का, बच्चे नहीं सुन रहे मैडम, इंटरेस्ट नहीं कर रहे, नहीं पूरे लेना। और इत्तेफाक से लास्ट के एग्जाम के और ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आए। नो कॉम्प्रोमाइज विद एग्जाम्स बोले मैडम। हम रिक्वेस्ट करें सर को बोले तो नहीं सबसे ज्यादा मैडम को बोलेंगे, नहीं बोले लेना चाहिए एग्जाम। और आप पूछिए बच्चों से आखिरी राउंड के और ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आए। और एक बार मैडम के पास so she used to always prepare a revision schedule every year after the completion of the syllabus. And she even not only make plan but also execute it very efficiently by instructing all the HMs, in charges and SLC teachers. Her planning has brought this incredible result. So second credit of today's result goes to Mrs. Bushra Jamal ma'am. Thanks a lot ma'am for your advices. Now we can't deny thanking our joint secretary. Thirdly, I feel immense pleasure to bid my congratulations and gratefulness on behalf of all the parents and students to Mr. Mohammad Salahuddin Farhan, Joint Secretary Wisdom Group of Institutions, for building such a successful strategy for preparation of SLC board examination during this lockdown. As we all know that the schools were closed, only few months we got time to teach the students. बच्चे भी परेशान थे, टीचर भी परेशान थे। सडन एक मीटिंग करें, टेंशन मत खोलियो। बीच में आपको याद होगा सिस्को वेबएक्स भी लिए हम लोग, रिकॉर्डिंग क्लासेस के वास्ते, फिर ज़ूम पेड वर्जन भी लिए आप लोगों के बच्चों के वास्ते, ताकि क्लासेस रिकॉर्ड वैसे बाद में देख सकना। हमें समझ में नहीं आ रहा था कैसा करना, ये गवर्नमेंट तो बुलाने की इजाजत नहीं दे रही थी। अब रिजल्ट के ऊपर कंपलसरी इफेक्ट पड़ता है क्लासेस नहीं हुए तो टेंशन मत खोलियो सब लोग। Farhan sir has conducted a meeting and suggested all of us by giving the software in our hands, that is Zoom, and with that it has helped a lot in the lockdown to take the classes.
and complete our syllabus as well as exam division. So he was worried for SLC students and their result due to a long study gap on account of COVID-19 and lockdowns. So he had arranged live online classes on Zoom Cloud Meeting app for SLC students from April 2020 till the end of board examination. On his advice, Mr. Mohammad Asifuddin sir has hired and incorporated a Zoom meeting cloud of paid version by paying thousands of rupees monthly. As Zoom has also a recording facility, his decision and strategy for online classes have produced today's result. जिनकी जद्दोजहद की वजह से, प्लानिंग की वजह से, कोशिश की वजह से आज हमारे सामने ये मौजूदा रिजल्ट है. So the third credit of today's result goes to Mr. Mohammad Salahuddin Farhan for his priceless contribution to the result. Thank you so much, sir, on behalf of the parents and students. Miss Azra ma'am and Mr. Salim sir, who have worked hard behind students consistently, continue बच्चों से जुड़े हुए रहे. जो बच्चा अटेंड नहीं करा उसको कॉल करने की जिम्मेदारी, उनको नोट्स की जिम्मेदारी. सलीम सर हर साल पूरे सब्जेक्ट्स के नोट बच्चों को हेल्प करते हैं. So every level of the students, they both have worked hard and with the help of well-experienced staff, they formed all timetable and implemented it perfectly for all exams and even awarded the student after scoring good to encourage them during the objective and rapid rounds. So the third credit of today's result goes to both HM Aisha Miss and Salim sir. Please both of you. Last but not least, I am very joyful to convey my congratulations and gratitude on behalf of Wisdom Management and staff to all the parents who trusted on Wisdom School and admitted the children. जो हम लोगों पे भरोसा करें और अपने बच्चों को आप यहाँ पे एडमिट करें, इसके लिए पूरे स्कूल की तरफ से और स्टाफ की तरफ से हम बेइंतहा आपके शुक्रगुजार हैं. They have not only supported their kids by spending money behind their studies, but also cooperated continuously to all the teachers for their venture. सिर्फ एडमिट कराए नहीं बल्कि हमारा साथ भी दिए पूरा साल होने तक. जब मीटिंग को बुलाया गया आप लोग आए, जो नोट्स के लिए हम बोले वो नोट्स आप लिए, नहीं ये नोट्स नहीं लेते नहीं बोले. हर एतबार से आप लोगों का कोऑपरेशन हमारे साथ रहा, जिसकी वजह से आज मौजूदा रिजल्ट आया. अगर शायद आप लोगों का साथ नहीं रहता तो शायद अभी रिजल्ट आने में मुश्किल होती हम लोगों को. So Alhamdulillah continues to all the teachers for the venture. Alhamdulillah, this is the result of your efforts. ये आप लोगों की मेहनत का ही नतीजा है. Many thanks on behalf of Wisdom Management and staff for all your trust and support. Parents, एक बार parents के लिए teachers के लिए. As because of your consistent effort, last year also we got A grade in Bidar district due to our result. And whereas many other schools got B and C grades. So now it's time to listen something from the remarkable personality. Our secretary sir is quite busy. We'll move for the other programs. अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिला होता है. और एक शेर के बाद हम फेलिसिटेशन की तरफ चलेंगे. मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं. माने जिंदगी में जो भी गोल हम करे हैं, कितना भी डिफिकल्ट होता है, it's going to be very easy in front of your efforts. आपकी मेहनत के सामने हर चीज छोटी हो जाती है. Okay, now let's move towards felicitation. As every year we go on felicitating from down to up, from the low percentage to the highest percentage. So first we'll move towards the second class students felicitation. For that, I would like to request Busha ma'am to felicitate them. First, Uzma Tahrir, daughter of Khalil Serika. Please. Okay, Aisha Siddiqa, Sheikh Majid, she got 50%. Divya, daughter of Amarnath, she got 56%. Please come on the rise.
Shaista Ifra Mahim, daughter of MD Amjad Khan. She got first class result, 60%. Please come on the rise. Safura Tanveer, daughter of Sheikh Mahboub. She got first class, that is 61%. If she is here, please come on the rise.